Welcome back to another lecture, particular integrals. Definition. We know ordinary differential equation in general form of order n is f of d into y equals to capital X, where f of d equal to d raised to power n plus k1 dn minus 1 plus k2 dn minus 2 plus up to so on plus kn. Therefore, if capital X, which is a function of x, is not equal to 0, then there exists particular integral or a solution when x is not equal to 0. From this equation, let 1 upon fd into x is that function of x containing arbitrary constants which when operated upon by fd gives x. f of d ऑपरेट करने पे 1 upon fd into x we will get x. Thus 1 upon fd into x satisfies fd into y equals to x, जो यहाँ भी लिखी गई है fd into y equal to x, इसको satisfies करेगा and is called p into y, particular integral. This is called particular integral. 1 upon fd into capital X is called a particular integral. 1 upon fd and fd are inverse operators. एक आपके पास fd है, एक 1 upon fd है. Both are inverted to each other. So therefore, if fd equal to d, so then 1 upon d into x equal to integration of x dx. Let 1 upon d into x equals to y, so operating by d, we get d times 1 upon dx equal to dy, that is dy by dx, when d equal to d upon dx, जब d by equal to d by dx हो, so therefore left hand side is x, that is equals to dy by dx. On integrating, what we get? X dx equals to y. No constant being here is no constant. When 1 upon d minus a capital X equal to y, then operating d minus a, both sides 1 upon d minus a into x, ऑपरेट करेंगे दोनों साइड d minus a times y. तो this implies here is capital X which is equal to d, that is dy by dx minus ay, or it can be written as dy by dx minus a into y, that is equal to capital X, which is called Leibniz linear equation, जो कि इस फॉर्म में है dy by dx प्लस p into y equal to capital X और k के फॉर्म में है. तो therefore
integrating factor here is e raised to power minus a dx, which is equal to e raised to power minus a is constant into x. This is integrating factor. तो therefore solution जो हमने previously किया है y into integrating factor equal to integration right hand side में जो भी है that is x integrating factor into dx. तो y into e raised to power minus ax equal to x e raised to power minus ax dx. This implies y equal to, इसको इस साइड लिख लेते हैं, e raised to power ax integration x e raised to power minus ax dx. Y equal to this. What is y? Y equal to this. So it can be written as 1 upon d minus a capital X equal to e raised to power ax integration capital X e raised to power minus ax dx. This is the another formula. Rules to find particular integral. Rules to find particular integrals. Consider the ordinary differential equation with constant coefficients like that d1y upon dxn plus k1 dn minus 1 upon dxn minus 1 into y plus k2 dn minus 2 y upon dxn minus 2 plus up to so on plus kn into y equals to x. It can be written as dn plus k1 dn minus 1 plus k2 dn minus 2 plus up to so on plus kn times y equals to x, where d equal to d by dx. This is most important to note. So therefore this is replaced by fd into y equals to x again, or particular integral that is equals to y, which is equal to 1 upon dn plus k1 dn minus 1 plus k2 dn minus 2 plus up to so on plus kn times x. Here this is polynomial in d. In short we can write 1 upon fd into x. This is particular integral. अब कुछ रूल्स है जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में किए थे. These rules are defined by explaining cases. Case 1, when capital X equal to e raised to power ax. When capital X equal to e raised to power ax, by solving and systematically arranging the terms, at last we get the formula directly 1 upon fd e raised to power x, that is particular integral, which is equal to 1 upon f of a e raised to power ax. Simply d is replaced by a. This is very important to note. Note it carefully. D is replaced by small a, that is coefficient of x e raised to power ax में जो coefficient रहेगा उसको हम replace करेंगे. अब यहाँ पे एक further generalized case है. When अगर जब पुट किया a, that is f of a भी 0 आ जाता है यहाँ पे. When f of a equal to 0, यहाँ पे तो क्या होगा, provided f of a is not equal to 0. When f of a equal to 0, so then the particular integral reduces to, we multiply x here, 1 upon f dash at a, f dash at a e raised to power ax. This becomes the particular integral, provided that f dash a is not equal to 0. अगर फिर 0 होगा तो therefore
एक और स्टेप कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एफ डबल डैश एट ए ई रेज टू पावर ए एक्स प्रोवाइडेड दैट एफ डबल डैश एट ए इज नॉट इक्वल टू 0 सो ऑन। इस टाइप से हम आगे चलते रहते हैं। तो दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर केस नंबर 1। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल of d square plus 5 times d plus 6 into y equal to e raised to power x. So therefore the particular integral equal to y, that is equal to 1 upon d square plus 5 times d plus 6 as explained earlier, e raised to power x। राइट हैंड साइड में कैपिटल X इक्वल टू e raised to power x। जब हम कंपेयर करेंगे e raised to power ax से, वेयर a इक्वल टू 1, तो देयरफॉर d इज रिप्लेस्ड बाय 1 हियर। तो देयरफॉर हम अलग से लिख सकते हैं f ऑफ d इक्वल टू d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6, f ऑफ a इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6। Therefore, f of 1 equal to 1 square plus 5 into 1 plus 6, which is 1 plus 5 plus 6, that is 12, is not equal to 0. So here the formula is 1 upon f of d into y equals to 1 upon f of a. Here is e raised to power ax, e raised to power ax, provided f of a is not equals to 0. This is okay with this is applicable here. So therefore we get 1 upon f of d e raised to power x, which is equal to 1 upon f of 1, because a equal to 1, e raised to power x, which is equal to f of 1 is 12, 1 upon 12 e raised to power x. This is the required particular integral. Question number 2, find the particular integral of d plus 2 d minus 1 का square into y equal to e raised to power minus 2x plus 2 sin hyperbolic x. Sin hyperbolic x, the formula for sin hyperbolic x equal to e raised to power x plus e raised to power minus x upon 2. So this implies 2 times sin hyperbolic x equal to e raised to power x plus e raised to power minus x. So we put simple here. So therefore particular integral, that is y, which is equal to 1 upon d plus 2 d minus 1 whole square into e raised to power minus 2x plus e raised to power x plus e raised to power minus x. अब हम सेपरेटली अलग अलग करेंगे, ब्रेक करेंगे इसको। पहले इसके साथ देखेंगे इसको, फिर उसके साथ देखेंगे, फिर इसके साथ, मतलब 3 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम सिंपल केस में हम किसी के साथ भी देख सकते हैं। लेट अस टेक e raised to power minus 2x here. So therefore 1 upon operator is here d plus 2 d minus 1 का होल स्क्वायर e raised to power minus 2x, पहले ये आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू, अब हम सॉल्व करते हैं इसको, -2 a इक्वल टू -2 रखा यहाँ, ये तो 0 बन गया। यहाँ पे -2 रखेंगे, ये नहीं बनाएगा 0। तो इट मीन्स इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 1 अपॉन d प्लस 2 इज टेकन आउट, 1 अपॉन d माइनस 1 का होल स्क्वायर e रेज टू पावर माइनस 2x। अंदर सॉल्व किया, -2 रखा यहाँ पे, -2 -1 -3, 3 होल स्क्वायर इज 9, 1 upon 9, that is equal to 1 upon 9 is taken outside here, 1 upon d plus 2 e raised to power minus 2x। फिर से सॉल्व किया इसको, तो -2 रखा तो 0 बना देगा, जैसे हमने इस स्टेप में किया। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करने के, एंड बाय पुटिंग और बाय मल्टीप्लाइंग x, नॉट फॉरगेट, तो विच इज इक्वल टू 1 upon 9 x टाइम्स
अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, d + 2 का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू d, दैट इज 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 e⁻⁻2x विच इज इक्वल टू x e⁻⁻2x अपॉन 9. दिस इज स्टेप नंबर 1. इसी प्रकार यू कैन ट्राई स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 इज 1 अपॉन, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही रखना है, d + 2 d-1 का स्क्वायर e⁻, पर सिंपल x है. अब जैसो x a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 रखा, 1 + 2 3 इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन डबल टाइम हो जाएगी यहाँ पे. तो इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन d-1 होल स्क्वायर, उसको बाहर किया पहले, इनसाइड इज d + 2. ये इसलिए रखा ताकि सबसे पहले जो नॉन जीरो है वो सबसे पहले सॉल्व करते हैं. e⁻x 1 + 2 दैट इज 3, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन d-1 का स्क्वायर e⁻x. तो नंबर 1 फर्स्ट टाइम रखा तो 0 हो जाएगा. तो दैट इज हेयर वी कैन ट्राई दिस स्टेप हेयर विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 x, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2 टाइम्स d-1 e⁻x, फिर भी 0 होगा. एक स्टेप और करना पड़ेगा, 1 अपॉन 3 x स्क्वायर, 1 अपॉन डिफ्रेंशिएशन 2, d-1 की डिफ्रेंशिएशन इज 1, दैट इज 2. This becomes e⁻x. The answer is 1 upon 6 x square e⁻x. So therefore, step number 3 remains here e⁻⁻x. You can try it. Step number 3. So then we can put here and getting the answer. Another rule defined by case number 2. When x is the form of cos ax plus b or sin ax plus b, अगर x इस फॉर्म में है, then what is the particular integral? तो particular integral is defined by pi which is equal to y, that is equal to 1 upon fd into capital X. Capital X की जगह हमारे पास cosine या sin हो, then what is the particular integral? तो therefore particular integral is which is 1 upon f of d and cos ax plus b, cos हो चाहे sin हो, whatever may be the among two. This is equal to, this can be replaced by d square here, 1 upon f of d square. d square की फॉर्म में रखना पड़ेगा इसको, cos of ax plus b. ये इसलिए रखना पड़ेगा, जब हम फर्स्ट टाइम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, और जब हम इसकी बाई यूजिंग चेन रूल करेंगे तो ये आ जाएगा बाहर a. तो फिर से हम कॉस लाना चाहे दैट शुड बी a स्क्वायर कॉमन. तो यहाँ पे रिप्लेस बाय d स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस a स्क्वायर. तो देयरफॉर वी विल गेट 1 अपॉन f ऑफ माइनस a स्क्वायर. कॉस है तो कॉस ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा. दिस इज द required answer. Particular integral. Simple. D square is replaced by simply minus a square, provided that f of minus a square is not equal to 0. Otherwise, we multiply x here and we differentiate numerator just like in case 1. तो therefore एक केस कर लेते हैं. For f of minus a square equal to 0, so this implies particular integral 1 upon f of d square cos ax plus b, which is equal to x into 1 upon f of minus a square cos ax plus b. यहाँ पे डैश आएगा क्योंकि x लग गया तो 1 डैश. दैट इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल. सिमिलरली exactly this remains same when we replaced sin by cos. एक क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d cube plus 1 into y equal to cos of 2x minus 1. सिंपल है.
अगर हम इससे कंपेयर करें a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -1. तो देयरफॉर पर्टिकुलर इंटेग्रल y that can be written as here, which is equal to 1 upon operator is dq plus 1 into cos of 2x minus 1. This can be written in the form of d square. d square की फॉर्म में इसको लिखना ही पड़ेगा. तो this is equal to 1 upon d square into d. You can break like that. Plus 1 cos 2x minus 1. अब d square is replaced by minus a square. Minus a square is minus 2 square. तो d square equal to minus 2 square minus 4. तो simple 1 upon minus 4 into d plus 1 cos 2x minus 1 minus 4d plus 1. अब डिनोमिनेटर में d है तो इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं. तो वी कैन राइट 1 अपॉन माइनस 4d प्लस 1 मल्टीप्लाई किया माइनस 4d माइनस 1 अपॉन माइनस 4d माइनस 1. ये इकट्ठा लिख लिया सारा ऑपरेटर इंटू कॉस ऑफ 2x माइनस 1. अब देखो यहाँ पे क्या बनता है. डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर इज माइनस 4d माइनस 1 अपॉन a प्लस b a माइनस b, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर इज 16d स्क्वायर माइनस 1 cos ऑफ 2x माइनस 1. d स्क्वायर अगेन रिप्लेस्ड बाय माइनस 4 हियर. माइनस 4 तब तक करेंगे जब तक डिनोमिनेटर बिल्कुल नॉन जीरो ना हो या नॉन वेनिशिंग ना हो. तो दिस इज इक्वल टू माइनस 4d माइनस 1 अपॉन d स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस 4. माइनस 4 यहाँ पे रखा, दैट इज इक्वल टू माइनस 64 माइनस 1 माइनस 65 आ जाएगा यहाँ. कॉस 2x माइनस 1. अब ये कॉन्स्टेंट में तब्दील हो गया, इज नॉट इक्वल टू 0. अब ये करेक्ट आ रहा है. माइनस माइनस कॉमन किया, वी कैन राइट 1 अपॉन 4d अपॉन 65 कॉस ऑफ 2x माइनस 1. अब यहाँ पे देखने वाली बात है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट 1 अपॉन 65 तो कॉमन आ जाएगा और 1 इंटू दिस जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू कॉस 2x माइनस 1 आ गया. अब 4 टाइम्स d है. d मीन्स डिफ्रेंशिएशन, दैट इज d बाई डी एक्स. इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा cos का, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 2x माइनस 1. फिर से अगेन किया और 2 आ जाएगा. तो वी कैन राइट हियर इन दिस वे इंटू 2. अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें एंड गेटिंग द आंसर. आंसर इज 1 अपॉन 65 cos 2x minus 1. This is overall common. Here is minus 8 times sin 2x minus 1. This is the required particular integral. Let's try another question. Question number 4. Find the particular integral of d cube y upon dx cube plus 4 times dy by dx that is equal to sin 2x. Solution. It can be written as d cube y plus 4 dy equal to sin 2x. d cube plus 4d y को कॉमन किया sin 2x. So therefore particular integral that is equal to y which is equal to 1 upon d cube plus 4d times sin 2x. So therefore it can be break d square into d plus 4d sin 2x. Here is sin 2x in the form of sin ax plus b where a equal to 2, b equal to 0. So therefore d square is replaced by minus a square minus 2 square minus 4.
यहाँ पे जब -4 रखा, दैट इज इक्वल टू -4 इंटू डी प्लस 4d sin 2x. This becomes 1 upon 0 sin 2x. This becomes infinite. So therefore, we change our formula. This is fd or fd square. So therefore, we can multiply x and differentiating this denominator here. So therefore, the formula becomes x times 1 upon f dash at minus a square sine of ax plus b. This is the formula. Here fd, which is dq plus 4d, fd square, d square into d plus 4d. So therefore f dash at d here is 3d square plus 4, f dash at d square, that is 3d square plus 4. So therefore f dash at minus 2 square, that is -4. So 3 into -4 plus 4, that is -12 plus 4, -8. So therefore here is f dash minus a square is -8. So x into 1 upon -8 sine times ax plus b, that is 2x, which is equal to माइनस को इधर लिख लेते हैं, -1 upon 8 times x into sine 2x. This is the required particular integral. This is most important to note that there are no arbitrary constants here in case of particular integrals. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस में आते हैं सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, यहाँ पे कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आएंगे इन केस ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल्स. Hence 2-3 more questions you can try also. Let's meet with another video lecture. Thank you so much.